Sovi, Yes, sir. Suravika, sorry. Am I audible? ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା ତ? Yes, sir. ହଁ ହଁ। ଆଉ କଣ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? କରିବେ? ହଁ ସାର୍ କରିବି କରିନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହଁ। କାଲି କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 4-5 ଜଣ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ରେ 70 ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିକି 15-16 ତାପରେ ଏବେ 4-5 ରହୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଓକେ। ଆଜ୍ଞା। ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭା ହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ। Yes, sir, ଶୁଭା ହଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା? Yes, sir. ଓକେ। Is it visible? ଦେଖା ହଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍? Yes, sir. ଓକେ। ଦେଖା ହଉଛି ତ? ହ୍ୟାଲୋ। Yes, sir. Yes, sir, ହଁ। ଦେଖାଉଛି। So unit 1, our first block 1, we are going to study the quantum chemistry. So এটা ଟିକେ difficult chapter, ଆଉ ଟିକେ practice କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ସାରା derivation ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ରେ ଦେଖେଇ ପ୍ଲସ୍ ତମର ଯୋଉ ଆମର material ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେଖେଇ। So first block 1 ର ଅଛି fundamentals of quantum chemistry and their model system. So unit 1 ରେ ଆମେ ପଢିବା introduction to quantum chemistry, unit 2 introduction to wave mechanics and particle in one dimensional box. This is a long time. So particle in box 2, that is 3 dimensional. So first chapter particle introduction to यूनिट 1 रे अछि कोन यूनिट 1 रे हमें पढ़िया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी, जैसा हम पढ़ता दिस आर बेसिक्स and different terms. So these are we are going to study in the PowerPoint. तमरा material अछि मु तम पय PowerPoint करछि सहज हो बोली
So this is देखा जाउची ଏବେ ଦେଖା ହେଲା ନା ନାଇଁ Yes, sir. व्हाट इज ब्लैक बॉडी तो आम फिजिक्स रे पढ़ी आम केमिस्ट्री क्वांटम केमिस्ट्री मेकानिक क्लासिकल मेकानिक्स रे पढ़िया व्हाट इज ब्लैक बॉडी सो ब्लैक बॉडी इज ए आइडियल बॉडी which absorbs all the electromagnetic radiation that strikes it so that all incident radiation completely absorbed so black body गोटे physical एमिति physical body गोटे तैयारी होता है फिजिक्स रो जो थिरे कि आमे जेते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जा भी रेडिएट देले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट पकेले ता सबु ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन विल ऑब्जर्व माने जा भी दबु हमर कोन जनरली लाइट पड़िले गोटे दिन सरे से आइदर ऑब्जर्व हो और ट्रांसमिट हो रिफ्लेक्ट so black body is designed in such a way that when reflect करियो emits 100% so black to the Himalaya. So I'm a Himalaya. So black body radiation, the electromagnetic radiation that would be radiated from Aviator. Black body जो radiation बाहर है, electromagnetic radiation. रे आमे गोटे होल करा हबो से होल रे this is the hole so if incident light will fall upon this so light will cross inside the hole and it will not reflect in any way so a good approximation of a black body is a small hole leading to the inside a hollow object hollow acts as a perfect absorber तो ये लाइट गले ये एमती लाइट रिफ्लेक्ट है ता भीतर सब absorb कर दियो so nature of radiation leaving the cavity through the hole depends on the temperature so our radiation depends upon the temperature so black body radiation got different theory अछि the theory depends upon the temperature of the black body so our incident of black body radiation so black body रे जेतेबेले absorb करिवो सब लाइट तो आमे जाने छे गोटे बॉडी जेतेबेले absorb करिवो लाइट किछि समय परे से लाइट ता से रेडिएट करे so the radiation intensity of black body रे तार intensity तार power तार intensity माने से केते intense that light that depends upon the temperature listen intensity increases with increasing temperature जिते टेम्परेचर इंक्रीज करियो सेते तार इंटेंसिटी इंक्रीज देखो 4000 केल्विन रे द पीक इज हाई so at higher temperature the peak is so intense the amount of radiation emitted increases with increasing temperature peak of pollution decreases with increasing temperature so this intensity of radiation depends upon the temperature so black body radiation, a black body in the thermal equilibrium emits electromagnetic radiation, termed black body radiation. The universal property independent of material used. So these are the different criteria of black body radiation. Other temperature, wavelength, intensity. These are interdependent with each other. So this is the graph of black body radiation. Listen, जो graph देखेली सही graph. So ये होची intense हवो. So listen at 6000 Kelvin. So and here 5000 Kelvin. जो intense माने ये बड़ peak बड़ा हवो. More intense हवो. जते wavelength temperature बड़ी ये होची different temperature wavelength versus intensity axis. So these phenomena has explained different laws like Wien's displacement, Stephen's law, Rayleigh law. तो टिके दिया अछि मु से कहि दउ खाली Stephen's law कोन
Stephen's law or Stephen's Boltzmann law, the energy radiated by a black body radiator per second per unit area per unit area is directly proportional to fourth power of absolute temperature. ଯେତିକି temperature ଥବ ତାର fourth power to the power 4 proportional to the power 4 that temperature କଣ energy per unit second per unit area. So listen, this is Stephen's law. Stephen's is a different introduction about Stephen's law. You are going to equation. Listen. So this F is energy flux, means energy per unit per second per unit area is directly proportional to e to the power 4 and is equal to sigma 2 to the power. So here sigma is the Stephen's constant. So this is a famous equation related to black body radiation. Okay. Next, once displacement ये सब गोटे गोटे लॉ अच्छी इंट्रोडक्शन चैप्टर रे तमे मु तुमको इजीली ये पावर पॉइंट बनैछि आई कैन इफ यू need I can share you through the your WhatsApp group. So once displacement, hello, am I audible? Hello, Yes, sir. हाँ हाँ देखा जाउछ ना स्क्रीन? Yes, sir. हाँ हाँ और शुण मु तुमको जेतु थियोरी हमर मटेरियल टिके लेंदी देइछि मु ताको इजी वे रे पावर पॉइंट बनैछि तुमको इजी हबो तमे चाहिले क्लास रे मु सब को शेयर कर दे पावर पॉइंट पीडीएफ व्हाटएवर नोट्स ओके. So Wien's displacement law, the black body radiation curve for different temperature peaks at a wavelength inversely proportional to black body radiation curve ta jo हुए for different temperature that peaks at different wavelength inversely proportional to. So देखते temperature बढ़िबो से कौन हबो से wavelength will be inversely proportional to radiation. So listen, your wavelength is inversely proportional to temperature C by T. So delta lambda max is inversely proportional to temperature. So this is the coming under physical chemistry. तो खाली इक्वेशन देखिया पड़ियो इक्वेशन टेके देखि के जीवो देखि जाई लिखियो नॉट ए प्रॉब्लम. So once displacement of black body radiation the delta max lambda max is inversely proportional to temperature. Next, this is Rayleigh-Jeans law. So here this law represents the Boltzmann constant. This is the equation related to Rayleigh. Suppose at long wavelength, the law matched experimental results very well. At short wavelength, there was a major decay. So here energy is inversely proportional to that. So this is the Rayleigh-Jeans law. तो ये होची तार ग्राफ तो ये ग्राफ रे कोन आमे जानिया वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी तो तमे कोन करिवो एई सब फार्मूला को मन रखि दबो तार लॉ मन रखि खाली इक्वेशन लिखि देले चलिबो. इंट्रोडक्शन से पचारि तो राइट अबाउट डिफरेंट लॉज रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन गोटे गोटे लॉ रखि दबो ता फार्मूला लिखि ताको गोटे गोटे ग्राफ कर देला. नेक्स्ट दिस इज Rayleigh-Jeans law. तो आधरे कौन दिस इज इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ अच्छी. So this is the temperature versus this ultraviolet cutoff for Rayleigh-Jeans law will looks like this. Next we will go to this is all about black body radiation. Then we will go to the photoelectric effect. This is another phenomena before the quantum chemistry. So quantum chemistry derived from this phenomena as black body radiation, then photoelectric. For what is photoelectric effect? Photoelectric effect is the effect. Photoelectric हमें पढ़ी था फिजिक्स रे प्लस 2 रे. दे गोटे रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मेटल ऊपर पड़ियो. देन मेटल ऊपर जो इलेक्ट्रॉन will eject, will bounce, will remove from the surface in the form of kinetic energy. Photoelectric effect was discovered in 1887 by Hertz. From this effect, we can know about the emission of electron from the metal surface upon irradiation with light.
लाइट गोटे मेटाल सरफेस रे पड़िले जो इलेक्ट्रॉन एमिशन हबो दैट फेनोमेना इज नोन एज photoelectric. It was later explained by Einstein. The phenomenon of electron emission माने बाहरी जीवा. When an electromagnetic radiation, light, sufficient frequency is radiated on metal surface. गोटे metal surface रे जदि आमर कौन इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन दैट मीन्स लाइट पड़िबो जो इलेक्ट्रॉन एमिट करिवो दैट फेनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. देखो एंटी गोटा इंसिडेंट रेडिएशन पड़ी इलेक्ट्रॉन कौन बाहर की इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बाहर की देखो इंसिडेंट लाइट पड़ला ये मेटल सरफेस रे डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन था दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल एमिट इन बाहर की पड़ेगा ejected electrons photoelectrons are called okay that will form of a equation but equation Einstein then when a photon strikes on the electron its energy is absorbed by it jete goda light thaba electron kon energy ko absorb karibo and the electron will move as a kinetic and some of the energy is used to dislodge the electron माने इलेक्ट्रॉन बाहर जते हमें लाइट दबा से मेटल सरफेस ऊपर पड़िबो मेटल सरफेस ऊपर जते पड़िला दैट विल हेल्प टू डिसलॉज मींस इलेक्ट्रॉन बाहर करिवारे सहायता करी फ्रॉम द मेटल सरफेस while rest appear as the kinetic energy of emitted. So energy of photon, total energy equal to energy needed to dislodge an electron that is HF0 plus maximum kinetic energy. Means say H mu is equal to HF0 plus kinetic energy. Okay. Therefore, HF, this is the equation, famous equation of photoelectric. आपको A formula देखी पारियो तो material formula. H mu F बदले mu लिखले भी पड़ा. H mu plus H mu 0 plus half mv square. ये होची kinetic energy. तो HPO जो incident radiation is equal to ये this is the radiation used the कौन सी work function used to dislodge the electron plus another electron removed in the form of kinetic energy. Work function का कौन थी पचार minimum amount of energy needed to dislodge an electron from metal surface. माने minimum energy दरकार गोटे इलेक्ट्रॉन कौन बाहरिया पाई मेटल सरफेस. Okay, that is known as work function. तो आर एसआई यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जा रहा यूनिट तापरे आउटा पचार थव दिस आर द टर्म्स रिलेटेड टू फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड एनर्जी का कोनती द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी needed to emit a photoelectrons from a metal गोटे मेटल सरफेस रु बाहरिया पाई जो फ्रीक्वेंसी दरकार ताकू कहती थ्रेशोल्ड. देखो लिखा है F0 is equal to C lambda C by lambda max. C is velocity, lambda is wavelength, F0 the threshold. So this is the total first probably work function तापर threshold frequency. Threshold wavelength maximum wavelength beyond which no photoelectron emission takes. Threshold wavelength कौन तो maximum wavelength येटा होची maximum wavelength ता तळकू आमे जदी लाइट दबा कि अधिका वेवलेंथ रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दबा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहरिवे. सो दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज. तो W0 वर्क फंक्शन इज इक्वल टू HF. Here W0 is work function, H is Planck's constant, F0 is equal to threshold frequency. And that will be SC by lambda and lambda 0 will threshold voltage. So another is cutoff potential the stopping potential. The minimum potential cutoff potential minimum potential or maximum negative potential for which photoelectronic effect is absorbed. Okay. So these are the कौन आमे कौन photoelectronic effect कौन definition दबा
तापर एई डायग्राम टा करिवा तार फार्मूला टा लिखिया फार्मूला रे दिस इज येटा कोन दिस टर्म व्हाट इज दिस टर्म ताको डिस्क्राइब करिवा डिस्क्राइब कले तार कैरेक्टरिस्टिक्स का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when light of suitable frequency is incident on a metal surface the electrons are emitted from the surface called photoelectric effect. The characteristics of photon adekon threshold frequency is different for different material. Photoelectric current is directly proportional to incident light. Kinetic of photoelectric is directly proportional light. Stopping potential directly proportional frequency the process is instant. तो जहाँ ଆମେ discussion कले कौन गोटे हूँ work function आउ गोटा हूँ कौन threshold frequency threshold wavelength then ହଉଛି cut off potential and kinetic energy half mv square ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ तो आइनस्टाइन photoelectric equation हଉଛି कौन h mu is equal to w0 plus half mv square h mu हଉଛି incident radiation w0 work function plus kinetic आपको हम भांगी परिया h mu is equal to h mu 0 plus half mv square तो ये W0 वर्क फंक्शन तो आदर आइदर प्रॉब्लम पच्चा तो ना इक्वेशन लेके ताको डिस्क्राइब ओके डिटाच तो इट सब डिस्क्राइब करा है कोन एम होची मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v H Planck's constant, mu frequency of radiation, mu zero threshold frequency. Okay. Next होची कौन significance mu less than mu zero माने work function रू less than mu ले is kinetic energy negative no emission होगा then mu will be more than mu zero so mu zero kinetic energy value कारण देखो एटी mu equal to mu zero ये समान है kinetic energy zero so mu is greater than mu zero mu is h mu greater than w0 है so h mu w0 plus r kinetic energy positive. So this is all about photo. I am a black body radiation पढ़िले photoelectric effect. Another is simple thing. Heat capacity ଗୋଟେ short 3 marks question ଅଛି heat capacity का कौन ଆମେ ଜାଣିତେ heat capacity cv cp ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିତେ heat capacity physics ର heat capacity is defined as the amount of energy needed to raise the temperature of substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. कौन heat capacity energy दरकार amount of energy needed to raise the temperature of a substance by 1 degree गोटे डिग्री टेम्परेचर बढ़िया पाई जो हीट दरकार amount of energy दरकार that is known as heat capacity. Okay, so how calculate the heat capacity? This is the formula C is equal to E by delta T. C is the heat capacity, E the total energy, delta T is तो around the room maximum
determination room temperature will. However, when cryogenics, low temperature chemical Hello.
Hello, hello, Yes, hello, sir. hello. ଆରେ କଟି ଯାଇଥିଲା ଭିଡିଓ ମତେ କହିବ ଟିକେ ଫୋନ କରିକି ମୁଁ ପଢେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଶୁଭୁଛି? Yes, sir. ହ୍ୟାଲୋ। Sir, ଶୁଭୁଛି। ହଁ ଶୁଭୁଛି ହଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖା ହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉନି। ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲ ସେୟାର ୟେସ୍ କରିଥିଲି। ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍। ଦେଖାଲା? ତ ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ବ୍ଲାକ୍ ବଡି ରେଡିଏସନ ପଢୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଇଫେକ୍ଟ। ଏବେ ଅନସର୍ଟେନିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପଢୁଥିଲେ। ଦେଖା ହଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ୟେସ୍ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ so this is ୟେସ୍ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉନି। uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle, delta x delta p हाँ हाँ is equal greater than equal to h. So ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ୟୁନିଟ୍ 1 ର ଦେଖିଦବା। ୟୁନିଟ୍ 1 ର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଛି। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कौन ता डेफिनेशन आइडियल बॉडी absorbs all the electromagnetic radiation that strike it so that all incident radiation is completely absorbed. तो ब्लैक बॉडी टा कौन? तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कौन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमती गोटा होल थाए। ए होल इंसिडेंट लाइट हेले it will absorb 100% and this is the intensity of black body radiation with temperature. ये होची ब्लैक बॉडी रेडिएशन रो ग्राफ टेम्परेचर वर्सेस वेवलेंथ। तो स्टेफेन्स लॉ हमें पढ़िले एनर्जी रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये तार इक्वेशन F is equal to sigma T to the power 4. F is energy flux, T temperature, Stefan constant. So Wien's displacement law, same the black body radiation curve is inversely proportional to temperature. Delta max wavelength is inversely proportional to temperature. एमती सब फॉर्मूला लिखिबो से कोन कोन लिखिदो खाली फॉर्मूला मन रखिया पड़िबो। रिले जीन्स लॉ सो ये सब ग्राफ काटी दबो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एबे पढ़िली। फोटो इफेक्ट कोन गोटे इलेक्ट्रिक रेडिएशन पड़िले इलेक्ट्रॉन टा मेटल सरफेस रो एमिट हे। तो एमिट हेले द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन emission when an electromagnetic radiation of a sufficient frequency is radiated on metal surface. Metal surface रो इलेक्ट्रॉन तो देखो इंसिडेंट रेडिएशन पड़ी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फोटो देखा होची। एस ୟେସ୍ ସାର୍। स्टूडेंट्स हाँ ठीक अच्छे जो देखा होने टी कहबो। फोन नंबर मोर सादरे आस्तव 79788909 टी फोन कर कह हैला। तो मु स्क्रीन शेयर कले देखा होनी एपटरे पळे जाउची काळे शेयर होनी कि कोन हो। तो आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन आइंस्टाइन कहले HF is equal to energy needed to dislodge electron plus maximum kinetic. So this is the famous equation HF is equal to HF0 plus half mv square. तादरे वर्क फंक्शन कौन हम पढ़िले मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to dislodge the electron. Threshold frequency कौन minimum frequency needed to emit a photoelectron from it. Threshold wavelength है maximum wavelength beyond which no photoelectric emission takes place. ये होची threshold wavelength. Cut off potential का minimum potential और maximum negative potential for which photoelectric charge. तापर characteristics of photoelectric already पढ़े। तो हमें कौन h mu is equal to w0 plus half mv square. एटी h mu कौन incident radiation work function plus kinetic energy. तापर heat capacity कले heat capacity is defined as the amount of energy needed to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. So this is calculating heat capacity. Heat capacity का formula को
C is equal to E by delta T. C होची heat capacity, E होची total energy, delta T होची difference in temperature. So low temperature रे एडी low temperature 0 degree हबो, C टा infinity ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ low temperature जो heat capacity हुए ତାକୁ କହନ୍ତି anomaly heat. ତାପରେ ଆମେ ବୋସ୍ ଆଟମିକ୍ ମଡେଲ nth orbital ର quantization करे, energy ହଉଛି En is equal to Rydberg constant by 1 by n square. So this is the energy of nth orbital of Bohr atomic model. ତାପରେ ତାହାର ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଜମ୍ପ କଲେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲରୁ, so this is the energy calculation. Then nth orbital କେମିତି, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, Rn is equal to A0 n square. So it is directly proportional to n0, here energy inversely proportional to n0. Okay, this is Bohr's right. Then पढ़ले dual character of electron, wave character, particle curvature, এটা कोई क्वेश्चन डी ब्रोगली इक्वेशन. हेलो देखा होची डी ब्रोगली क्वेश्चन. So D Berkeley is equal to H mu is equal to MC. Hello, Yes, audible? sir. Visual? Yes, sir. देखा होची पिलामाने? हाँ आमे जानिचे डी बर्गली इक्वेशन पुराना जिनस SC by lambda. तो ये होची कौन, E is equal to H mu, E is equal to MC square, दीटा combine कले, H mu होची H C by lambda, H होची Planck constant, C होची velocity of light, lambda wavelength, ता combine कले lambda is equal to H by MC. ये होची डी बर्गली. ये सब आगे पुराना पाठ टिके टिके पढ़ी भितर. So Heisenberg uncertain principle जानଛ, at a time simultaneously we can't measure both position and momentum of a object. So delta x into delta px is greater than equal to h by 2. Delta uncertainty principle, uncertainty moment. Then it is h by 2. So uncertainty principle state that position and momentum can be both measured exactly at the same time. Okay. So you have the uncertainty principle. Okay. ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? The next ଆମେ hello hello Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये मेटेरियल, ये जो तम मेटेरियल तो मेटेरियल अनुसार जा अछि मु ताको सब पावर पॉइंट रे देखे देई. तो मेटेरियल तो सब है एटॉम लाइन स्पेक्ट्रा रो फोटो इलेक्ट्रिक ब्लैक बॉडी हीट कैपेसिटी सब ये कला. दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके, इंट्रोडक्शन 1. सो इंट्रोडक्शन वाई यूनिट 1 है. यूनिट 2 रे कोन अछि देखो, यूनिट 2 रे हमें कोन पढिबा, different parts of quantum chemistry, different postulates and different basic parts of quantum. देखा होची स्क्रीन. yes. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वांटम के फास्ट पोस्टुलेट वेव फंक्शन psi. हम देखिए दिस इज वेरी वेरी वेल नोन फंक्शन psi. psi टा कोन हमें पढिबा सब बड़े psi जो प्लस रे तुम पढ़ता वेव फंक्शन or a state function is an important property in quantum mechanics. Very very important function to every state to physical system. There is a function psi. Psi is a function. Okay, so this is psi. When a wave mechanics रे wave जेतेबेले wave mechanics, so wave रा property study करिया पाई this psi term is used. So this is the look psi एमती लिखा जाए पूरे त्रिशूल भलिया देखा wave function. This is quantity that describes a wave characteristics of a particle. कौन गोटे wave character को ये quantity describe करे. In a simple words, it is a storehouse of all information of a system. याद रु कौन सब गोटे system रो सब information साइड में मिले. So it is we can amplitude of mathematical. Psi is a function. I mean, it's a function. This is a function of time, function of distance, function of radius, function of wavelength, whatever. Psi is a function. So any system will define
in terms of psi. Psi square कौन ता square कले कौन होगा? The probability of finding a particle located in distance r of time. गोटे probability गोटे electron और गोटे particle पाइबार probability possibility जानले psi square. तो हम psi जानले this is psi square. Psi square कौन probability of finding a particle. To take square vanishes out, it will be easier. So psi square holds called probability of finding out. So these are the different terms of psi. ଆମେ plus ରେ ପଢୁ time independent Schrodinger equation देखो h ये operator Hamiltonian operator psi ये wave function e psi ये होची eigen value ये होची eigen function. So this is the time independent कौन Schrodinger equation. So time dependent Schrodinger equation looks like E h bar d by dt psi th. ये सब use of a particle in a box. Time independent Schrodinger equation. So these are the equation तम आधे maximum equation मन रखिया तो टिके टेक्निकल जिनस सब तमे आधे बुझिबा बुझिबो प्लस आकु दे लिखिला बेले सब आडे तुमको इक्वेशन लिखिया पड़ो तुमको टिके प्रैक्टिस करिया पड़ो शॉर्ट शॉर्ट रे लेखो बरम प्रैक्टिस अधिक लेंदी लिखिबनी तो हमर इशू इक्वेशन को टच सो दिस इज h minus h square by 2m del e आगुरु डिराइव reach r तम दरकार नहीं डायरेक्ट पुट करियो जोडी दरकार del square plus dr psi r e psi. So this is the time independent Schrodinger equation. So wave function psi square function ये होची different function representation. Postulate 2 को होची function psi must be a single value finite smoothly varying in continuum. So psi must be a single value. So कौन आदे s c f b s होची single value c होची continuous value थबो f होची finite value b boundary condition को जाके थबो n होची normalized condition माने दीटा function मिसेले 1 होगा. So these are different. Postulate 3 कौन every observable of a system in classical mechanics like position, velocity, moment of energy, they are correspond to mathematical operation in quantum mechanics. So quantum mechanics रे ये होची mathematical different. तो quantum mechanics हम कौन ऑब्जर्व करू पोजीशन केता अछि velocity केता अछि momentum केता अछि energy केता अछि. So these are the different postulates. So ये postulate से अनुसार different operator अछि तो ये होची multiple operator ये होची मोमेंट px होची मोमेंट ऑफ ऑपरेटर ये होची काइनेटिक ये होची सिंबल डिफरेंट ऑपरेटर ऑपरेटर माने जोटी ऑपरेट करा हबो जाकी किछि ओटा बाहरी यही ऑपरेटर ऑपरेट कले हमें x px ऑपरेट कले हमें को मोमेंटम बाहरिबो कई ऑपरेट कले काइनेटिक एनर्जी v हेले पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी ये सब कैलकुलेट. So these are the different operators. Position operator, Hamiltonian operator, H, Laplacian operator, delta, momentum operator, P, angular momentum, L, kinetic energy. So ये operator हमें total ए पाठरे सब operator कोठे momentum बाहरिबो, कोठे position बाहरिबो, कोठे angular momentum बाहरिबो सब देखिया. हला तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर और हैमिल्टन ऑपरेटर केम देखा जाए ए डेल्टा x फाई dx तो आधरे गोटे आइजेन वैल्यू एपटरे जात हवा आइजेन वैल्यू ये होची आइजेन फंक्शन. ओके postulate 4 postulate 5 will be tell us about how we will calculate the properties of system or system or properties. For an measurement of observable property operator a ये psi होची फंक्शन ए होची ऑपरेटर ए ऑपरेटर psi ऊपर ऑपरेटर तो वैल्यू कौन बारिबो ए psi ए रो वैल्यू को कोनती आइजेन वैल्यू आउ ये होची आइजेन इक्वेशन तो आइजेन वैल्यू ए ऑपरेटर जदी psi ऊपर काम करले तार जो रिजल्ट हवा आइजेन वैल्यू. तो दिस मीन्स ये सब ऑपरेटर केमती पोस्टुलेट लिखा है केमती ऑपरेटर ऑपरेटिंग
Postulate 4, when psi is not an eigenvalue of A, then we totally average value बाहर करेंगे. Okay, तो एठी जदि आइजेन वैल्यू बाहरलानी तार एवरेज वैल्यू बाहर करिया को कौन पड़ियो हमर कोन पोस्टुलेट 4 होउछ. तो ये सब एवरेज वाले खाली ये हेले कोन आइजेन वैल्यू तार एवरेज वैल्यू बाहरला एमती है. तो डेरिवेशन ये हूँ इंडिपेंडेंट को यार डेरिवेशन आमर थाए जो प्लस थ्री आम पढ़ू आगे खाली यूज करू डेल स्काई स्क्वायर वाई बाय dx प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर ये हूँ काइनेटिक एनर्जी माइनस v साई 0. तो ये हूँ टाइम डिपेंडेंट कौन टाइम इंडिपेंडेंट कोरिजर इक्वेशन. ये तार तार मोमेंटम बाहर करंत एटा सब टोटल मोमेंटम ऑफ डिफरेंट. तो h डेल स्क्वायर ये सब मोमेंटम और ऑपरेटर. तो हमें देखिवा आ पर हमें पढ़िया कोन मेन जिनिस जस्ट अ मिनिट यूनिट. हमें यूनिट 1 रे कोन पढ़ले हमें ब्लैक हेलो विजिबल. Yes, sir. Yes, sir. हाँ यूनिट 1 रे हमें ब्लैक बॉडी Yes, रे sir. से फोटो हीट कैपेसिटी पढ़ले. हीट कैपेसिटी एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ले. तो यूनिट 2 रे हम यूनिट 2 रे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर हैमिल्टनियन रियल ऑपरेटर बेसिक देखो बोले कौन जानिया भाई. ओके और बहुत सारा ये लिखा है कि मतलब शॉर्ट रे कौन कौन ऑपरेटर कौन नहीं सब यूनिट 2 रे पढ़ा. So unit 3 is very important. Practical calculation हमें करिया. This is a very good long time. This is a very important long time. Practical in one dimension. देखो सबुआड़े लॉन्ग टाइप पर सो पार्टी वन डायमेंशनल जो ता ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ରେଡିमेଡ୍ ନୋଟ୍ ଅଛି ସରି ସରି ଦେଖିଲେ हेलो Yes, sir. टेबल पर चढ़ी पढ़ गला पेट माडा गला छाती देखा माडा होची गला स्क्रीन भाई दिन लक्ष्य Yes, sir. स्क्रीन Yes, देखा sir. होची तो Yes, sir. देखा होची सुबह होची ना नहीं देखा होची हेलो Yes, sir. ପିଲାମାନେ Yes, ଦେଖା sir. ଦେଖାଉଛି. ହଁ ଦେଖ ଏଇ ନୋଟ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି Yes, ପୁରା sir. परफेक्टली लॉन्ग टाइप ଲେଖା ହେଇଛି ଡେରିଭେସନ କରା ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବି ଏ ଡେରିଭେସନ ଟିକେ ବୁଝ पूरा परफेक्ट ମୁଁ नोट कर ଦେଇଛି. तो पार्टिकली वन डायमेंशनल बॉक्स तो याद डेरिवेशन हम इक्वेशन पार्टिकली इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स is a fundamental quantum mechanical approximation describe the translation motion of a single particle confined inside an infinite deep well from कौन पार्टिकल गोटे पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स रे अछि कन्फाइंड बाउंड्री ता बाउंड्री अछि एउटू से दिगा मूव कर पारि. तो आधे हमें कौन पढ़िबा ट्रांसलेशनल मोशन माने वन डायमेंशनल मोशन केमिति गला सीधा है not two dimensional or three dimensional. Sorry, not three dimensional, only translational motion. One particularly one dimensional, the particle in a box probably is a common application of quantum mechanics model to simplified system. गोटे infinite boundary गोटे particle था. आधे कौन पढ़िया the solution to probable problem give possible values of आधे गोटे particle energy of psi calculation. E represents allowed to energy values. Psi x is the wave function, and psi square gives us probability of locating particle or probability of finding a particle at certain position. To solve the problem, এই problem को solve करिया पाई हमें चारिटा जिनिस आधरे बाहर करिया. कौन बाहर करिया डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व करिबा स्क्रोडिंजर इक्वेशन
define the wave function, define the allowed energy. कौन आम चारिटा जिनस बाहर करिया तार पोटेंशियल एनर्जी बाहर करिया स्क्रोडिंजर इक्वेशन वेव फंक्शन देखो ये गोटे बॉक्स पार्टिकली वन डायमेंशन आधे बाउंड्री अच्छी 0 रु x होची तार लेंथ हो 0 रु l हो तार लेंथ पार्टिकल टा मूव करि परिबे ई बाउंड्री ऊपर होची इनफाइनाइट बाउंड्री अछि ऊपर जते उठी परियो किंतु ए बाउंड्री भितर से फिक्स रहे particularly in one dimension infinite potential well of dimension A. Consider a particle moving in a one dimensional box of length A. तारे सब लेखा है long type जन में का consider particle moving in one dimensional box of length ओटे L length रे infinite high walls of length. Inside the box of potential energy V is zero particle is not active. तो आधे पार्टिकल बॉक्स वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल इज जीरो तो जीरो रु एल भीतर ये मूव कर ओके we assume walls are infinite potential energy आधे लिखा है पोटे मो डायरेक्ट इक्वेशन so this is Schrodinger time independent equation Schrodinger minus h square by 2m del square del psi square by dx square dx ये होची पोटेंशियल एनर्जी ये होची काइनेटिक तो ये इक्वेशन को पके ये इक्वेशन मेन स्टार्टिंग इक्वेशन ये इक्वेशन ता पड़ी एदिरा एम होची मूविंग आर मास ऑफ ए पार्टिकल ये होची एनर्जी हमर इनसाइड द पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी जीरो पार्टिकल जा मूव करिनी इनिशियल एट x इज जीरो 8 इक्वेशन 1 खाली गोटे इक्वेशन आ गोटे इक्वेशन वैल्यू पड़ियो आरे देइची h कोन सब लिखियो h is reduced Planck constant where h bar is equal to h by 2 pi h by h square h bar जगह h by 2 pi m is mass of particle psi होची स्टेशनरी टाइम एंड वेव फंक्शन vx पोटेंशियल एंड e एनर्जी सब इक्वेशन लिखी सब नोट वाला बढ़िया गोटे लिखी This equation can be modified a particular mass m free move to a parallel to x axis where 0 when v is equal to 0 देखो v 8 0 पके दवा gl 8 और पूरा 0 हो जीवो equation 1 will become equation 2 h square by 8 pi square m del square psi by dx square is equal to e psi x एटी गोटे टर्म हो गया तो इक्वेशन 2 आइला इक्वेशन 1 रो 80 0 एटी h बार को h by 2 pi पके देछि आधरे स्क्वायर कले स्क्वायर 4 pi स्क्वायर 4 तळे आइले 8 pi स्क्वायर हैला क्वेश्चन बुझि पाइला नेक्स्ट so this equation has been well studied given general equation psi रहोछि in sin and cos function psi x is equal to a sin kx plus b cos x तो ये जीरो बाहरला केते बेले 8 x equal to तो
टोटल इक्वेशन है जो एटी b0 हो गला माने b0 हो गला माने तो टोटल फंक्शन ऑफ psi is equal to a sin x for all a ର value को k ର value हेलो हेलो Yes, sir. हेलो Yes, sir. नेट कौन पाए पड़े डिस्कनेक्ट है तो हम शेयर कर जाओ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖାଉ ତ हेलो Yes, sir. କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲେ हेलो ହଁ ଏଇ ଡେରିଭେସନ ପଢୁଥିଲେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ୱାନ୍ ଡାଇमेନ୍ସନାଲ ବକ୍ସ ତା ଦେହରେ କଣ ଆମେ ଏଇ ସ୍କୋଡିଞ୍ଜର ଇକ୍वेସନ ରେ ଏଇଠି କଣ ପକେଇଲେ ଏଇଠି ପୋଟେନସିଆଲ ଏଇଠି ଜିରୋ ପକେଇଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ପକେଇଦେଲେ ଏଇ ଇକ୍वेସନ ଟା ଏଇ ଫର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା तो यही फॉर्म যেতବେଳେ আসে এই फॉर्म को ଆମେ ଇଏ ଗୋଟେ sin फंक्शन फॉर्म ଅଛି sin x a sin k
तो आधे आम कौन इक्वेशन 2 हो गला तापर इक्वेशन 3 ए इक्वेशन 3 रे ए बी के रा वैल्यू पकेया तो आम ए के रा जतले x इज इक्वल टू 0 साई इज इक्वल 0 साइन भी 0 हम जतले b रा वैल्यू 0 हम तो b रा वैल्यू 0 पकेले साई इज इक्वल टू a sin kx तो a sin kx हो गला तापर आम कौन d साई या को ए फंक्शन को डेरिवेटिव करिया so derivative of fourth function तो d psi by dx k cos kx आर कौन डबल डेरिवेटिव कौन d psi स्क्वायर हमें जानी चाहिए डेरिवेटिव ऑफ cos x is equal to sin cos sin x रा cos सॉरी cos x रा sin x जदि गोटे कांस्टेंट थबो से कांस्टेंट बाहर पड़े k sin kx तो cos रो कले पुनी sin cos रो sin sin रो cos किंतु cos रो कला माइनस कोटा तो ये डबल डेरिवेटिव कले माइनस k स्क्वायर a sin kx तो यही को हमें यही तरह हमें जानते a sin kx होची sin तो आपको यही फॉर्म को आनिबा d sin स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस k स्क्वायर sin तो 5 नंबर इक्वेशन 6 नंबर इक्वेशन आला तो हमें कौन करेगा ना now we compare 5 and 6 5 and 6 को कंपेयर करिया तो हमें d स्क्वायर साई a स्क्वायर साई तो ये जोटा कोठो आनले एटा इक्वेशन 2 हमर एटला देखो इक्वेशन 2 ए इक्वेशन 2 सहित इक्वेशन 6 को कंपेयर करिया तो ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 6 कंपेयर d स्क्वायर साई dx स्क्वायर सेम रहला ए दिस टर्म इज इक्वल टू a स्क्वायर तो k स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन तो k रे वैल्यू वैल्यू बनी k रे वैल्यू रूट ओवर और टू द पावर k रे वैल्यू ଏବେ କଣ ଜାଣିଛ ସାଇ ଦେବା ବୋଲେ ଇ ଇକ୍ୱେସନ 9 ଓକେ ତାପରେ a ର ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ତ x ଯେତେବେଳେ 0 ସାଇ 0 x a ଯେତେବେଳେ ସାଇ ବି 0 ତ ଆମର ସାଇ a sin x ତ k x ଜାଗାରେ a ପକେଇଲି 0 ହେଲା a sin k l 0 sin k l a ଟାଇପ ଟୁ ଆସିବ जीरो तो हमर कौन साइन कल साइन in फाइव
टीम बनेइबी टीम एडिट करे बोला सब आड़ को हो हेलो सुबुची Yes, sir. टी आले हमें डिटरमिनेशन देखा होची ना पीडीएफ टा Yes, sir. देखा होची Yes, sir. डिटरमिनेशन ऑफ अलाउड एनर्जी एनर्जी कैलकुलेशन करते के रे वैल्यू इक्वेशन 8 रे मिलथला तो साइ इज इक्वल टू ए sin 8 के रे वैल्यू के एक्स के रे वैल्यू पकेटे हमें साइ इज इक्वल टू ए sin n by a रे ये 12 इक्वेशन 12 रे एटा बाहरला इक्वेशन 9 पे एटा तो हमें कंपेयर करिवा इक्वेशन 12 सहित 9 ये सब समान अछि तामाने दिस फैक्टर इज इक्वल टू दिस एंड दिस फैक्टर इज इक्वल टू n pi by a तादरे एनर्जी अछि ना नहीं एनर्जी को बाहर को नै आसी तो हमें बोथ साइड कर दबा कोन स्क्वायर स्क्वायर कले कटि जीवो ये n स्क्वायर pi स्क्वायर by l स्क्वायर हो तो फाइनल इज इक्वल टू n स्क्वायर a स्क्वायर by 8m स्क्वायर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट इक्वेशन एटा मन रखियो प्रॉब्लम जदी पइला तो En is equal to n square h square by 8ml square. So n value varies 1, 2, 3 एमती vary करे. Okay. तो E1 is equal to h square by 8ml square. E2 is equal to 4h square by 8ml square. E3 n value 1 to 1 पकेले this value, 2 value कले this value, 3 square कले this value. So this E cannot be 0. 0 है परियो कारण n ର value 0 हबनी तो जदी 0 हबो ताकू कोनती कोन तार value 0.n तो E ର डिफरेंस E1 रे ती value n जगह 1 En is equal to n square h square by 8ml square. This tells us that energy of a particle is quantized. The lowest possible energy of particle is not zero. This is called 0 point energy. देखो ये equation of particle in box रे different energy level n1 h square by 8 ml square n2 होची 4 h square by 8 ml square n3 हेले 9 h square by 8 n4 हेले 16 h square by 8 जदि आमे गोटे n2 रु n3 जंप करिया n1 रु n2 ताले एनर्जी डिफरेंस केमती En plus 1 ru n minus ताकू एमती n plus 1 स्क्वायर minus n स्क्वायर वैल्यू बाहर कले 2n plus 1 तामाने n रो वैल्यू जा थबो धरो 1 रु 2 वाला 1 पकेलु 2 1 3 3 e1 जति हबो सेति e1 एति थला तामाने 3h स्क्वायर by 8 तो हमें जदि मोमेंटम मारिया मोमेंटम रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2m p होची मोमेंटम तो मोमेंटम बाहर कले केते px is equal to 2ma रो रूट ओवर 2ma is equal into e रो वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर by 8ml स्क्वायर हा ताने e होची n स्क्वायर h स्क्वायर by 8ml स्क्वायर px मोमेंटम इज प्लस माइनस ns by 2m तो जदि एनर्जी बाहर करिया पड़ला n स्क्वायर h स्क्वायर by 8ml स्क्वायर बाहर करियो एनर्जी पचारि थबो n देई थबो सब रो वैल्यू पुट करियो एनर्जी बाहर करियो मोमेंटम बाहर कले n h by 2m खाली n h by 2m so particle in one dimension is also consistent with Heisenberg so Heisenberg uncertainty principle हम पढ़ते it is not possible even in a principle to determine both the position and moment of electron with equal exactness. So exactly हमें both position and momentum माप परिया and because momentum helps. Now will ये केमती uncertainty principle आदरे यूज करे एटा तमर पढ़ी पारा ना पढ़ी तो मेन डेरिवेशन मो मूल रूट के देखि दउची तम सुविधा हबो particle in one box कौन लिखिला ये सब थ्योरी टिके लिखियो मेन इक्वेशन
मेन कौन इक्वेशन ये तीनटा जिनस आधे बाहर कर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पकेबू स्कोडिंजर इक्वेशन रे पकेबू वेव फंक्शन साइर वैल्यू बाहर करू एनर्जी वैल्यू देखो एमती पार्टिकुलर 1 बाय एटी 0 रु एल अछि एपटर गले 0 ऊपर गले इन्फिनिटी तो फास्ट कौन पार्टी इंडिपेंडेंट स्कोडिंजर इक्वेशन टा लिखिबू हेलो आधेरे कौन पोटेंशियल एनर्जी 0 पकेकी इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 ये होची इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 हे गेला इक्वेशन 2 पर कौन होबो इक्वेशन 3 दिस इज a स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन psi x psi x psi x is equal to a sin kx plus b cos x तो आपको कौन आदरे a के b र वैल्यू सब बाहर कर एठी आगे a को 0 करियो आकु 0 करी b को 0 करी इक्वेशन 3 गला सब इक्वेशन गोटे गोटे देखि देले तुमको हे इक्वेशन 4 है डी b को 0 कर देला तो psi is equal to a sin kx बाहर कर बाहरला तापरे कौन करिवु यही इक्वेशन को डेरिवेटिव बाहर करू डी साई बाई डी साई बाई dx डेरिवेटिव बाहर तार डबल डेरिवेटिव करू एई जिनिस बाहर ओके तो आकु कौन करिवु यही a sin x र वैल्यू साई केते तला 8 देखो ये 8 था साई a sin x आ जगह रे साई पके दो तो आ जगह रे हम साई पकेले इक्वेशन 6 है तो ये इक्वेशन 6 को पुणी आम जो पोटेंशियल 0 बाहर था ता सहित कंपेयर कर देखो आ सहित आको कंपेयर कले देखो ये समान ये फैक्टर को हमको एपट को नहीं आसी तो ये जिनस रहिला 7 और 6 को कंपेयर कले ये k र वैल्यू को हम बाहर दियो k र वैल्यू होची एटा एठी वाला k टर्म k र वैल्यू को एतिकी बाहर करियो ए के र वैल्यू कोड पर साई ए sin kx ए के जगह रे पके ले गेला साई आपरे ए र वैल्यू हार करे तो ए र वैल्यू हार करिया को ए इज इक्वल टू sin फंक्शन पाए तो sin k l इज इक्वल टू 0 k l होची n पाई k इज इक्वल टू n पाई बाय l तो एटी पुनी k रे जगह रे n पाई बाय l x करी साई इज इक्वल टू a sin n पाई बाय l तो पुणी कौन एठू नॉर्मलाइज हो साय को साय रे गुणी तो गुणिले एठी फैक्टर गुणले एठी a स्क्वायर रा वैल्यू आसी तो a स्क्वायर एमती फैक्टर गुणी गुणी की तो a रा वैल्यू एठी 2/x सब सिस्टमैटिकली डेरिवेशन आइची तो कोड बुझी सब आडे बुझी परियो खाली स्क्वायर आइची जदी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जानथो तो इट इज इजियर फॉर a इक्वल 2/x तो साइ इज इक्वल टू a sin n pi by lx पिक तो इटी a र वैल्यू बाहर गला 2/l रूट ओवर sin n pi by lx तो आपको ए वैल्यू सब आड़े ये sin x रो इटी k र वैल्यू बाहर गला a र वैल्यू रा सब पके तापर k र पुणी k आला एनर्जी केम बाहर कर k र वैल्यू एटा बाहर थला साइ र वैल्यू एटा बाहर तो हमें कोन करिया साइ र वैल्यू a sin n pi by l बाहर थला तो ये दुटा को कंपेयर करिए ए को सब समान ये दुटा को इक्वलाइज कर ए ई र वैल्यू ए स्क्वायर कर दो ई र वैल्यू आ तो दुटा स्क्वायर ई र वैल्यू फाइनल वैल्यू n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 8n स्क्वायर दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो n1 वाले कौन वारियो n2 वाले कौन 3 वाले एनर्जी लेवल सब ओके तो दिस इज तो आपको आइजेन पार्टिकल एटा एते नाही तो तोरा डेरिवेशन अछि दे तो वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नोडल प्रॉपर्टी तो नोडल हम जानचे एटा nh/2 है आपको डिफरेंट नोड कले नोड माने एठी n1 हेले आधरे नोड ना नोड माने जते क्रॉस सेक्शन दिस इज नोड तो गोटे वेव है आउटा लेवल को गले दीटा फेज को गले तो नोड होची दिस वन तो node means where probability of finding electron is 0 एटी गोटे n is equal to 2 रे गोटे node n is equal to 3 रे दीटा node तामने n - 1 node रो कैलकुलेशन n - 1
तो साइ स्क्वायर हेले केमती फंक्शन हो n1 तो साइ स्क्वायर दिस इज जानो साइ स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू n minus 1 हेलो सुबुची Yes, sir. हाँ ये हूँ पार्टिकुलरली वन डायमेंशन गोटे डायमेंशन माने x रा वैल्यू बाहर थला 3D हेले तीनटा कोऑर्डिनेट आसबो x y z तो पार्टिकल टा गोटे मोशन रे न जाई कि पूरा बॉक्स सारा बुलियो मींस वन डायमेंशनल गोटे x एक्सिस रे थला थ्री डायमेंशनल x y z एक्सिस तो इलेक्ट्रॉनिक मोशन इन एटम्स और molecules are three dimensional. Three-dimensional box model should be more appropriate. तो ये रेक्टेंगुलर तो ऑपरेटर एक्स वाई जेड वैल्यू तो एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेट हैला स्क्रोडिंजर इक्वेशन एमती हमर ए स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डी साइ स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर था ये जेतु थ्री डायमेंशनल डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर साइ पोटेंशियल v x y z हबो साइ x y z ई साइ y x तो एमती एक्स वाई जेड खाली पके तो एक्स वाई जेड हेले हमर जेंती पोटेंशियल जीरो पड़थला इक्वेशन है जो सेम सब इक्वेशन हो तो इक्वेशन आदरे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जे कोऑर्डिनेट अलग अलग तो फाइनली आमे एक्स रा वैल्यू 2/lx sin n pi lx तो आथरे n pi l करथले एठी x टर्म y टर्म z टर्म जेमती वन डायमेंशन सेम तिया को आमे मल्टीप्लाई कले तो फाइनल इक्वेशन आम a स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर भागतला 8 देखो सेठी कोन भागतला n स्क्वायर s स्क्वायर बाय 8 एटी n बदले nx ny nz बाय l स्क्वायर lx स्क्वायर y तो ये अलग अलग है तो e is equal to a square 8m nx स्क्वायर बाय lx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर ny so ये सब डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट तो क्यूएल फंक्शन जेतबे क्यूब थबो गोटे क्यूबिकल बॉक्स गोटे क्यूब रो आमे जानि से सब लेंथ समान lx ly l तो सब रो l सेम इट सब l पड़े l स्क्वायर हैला ता माने इक्वेशन को h स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर nx स्क्वायर ny स्क्वायर nz स्क्वायर खाली nx ny nz बदल लोएस्ट एनर्जी केतला हो when nx1 ny1 nz ताने 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टोटल हम 3x स्क्वायर तो ये होची e1 1 y कोऑर्डिनेट 1 b c कोऑर्डिनेट 1 x y z z कोऑर्डिनेट तो e1 1 2 is equal to e2 1 2 1 देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 x कोऑर्डिनेट 1 है पाई y कोऑर्डिनेट 1 z x नहीं पाई x कोऑर्डिनेट सपोज 1 है y का 2 हो z का 1 हो तो ये कौन हो r वैल्यू जा r वैल्यू समस्तन वैल्यू s स्क्वायर बाय 8ml स्क्वायर ता माने n रो ई 1 स्क्वायर 2 रो स्क्वायर बा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो स्क्वायर प्लस सब समान नहीं तो आर एनर्जी सब समान हो तो जो एनर्जी समान हेले ताकंती डीजेनरेट्स है कोन द एनर्जी ऑफ स्टेट्स हैविंग मोर देन वन वेव फंक्शन एनर्जी स्टेट्स हैविंग मोर देन वन वेव फंक्शन state con 2 to s 2 1 state in that समतंत्र सेम एनर्जी ताकंती ट्रिपल डी है e21 e121 e112 6 स्क्वायर है
तार भी तीन टा वाला ट्रिपल जेनेरेट तो E11 होची नॉन डिजेनेरेट तो एनर्जी लेवल्स इन क्यूबिकल बॉक्स तो एठी पचारिबो एमती एनर्जी को एनर्जी टा होची कोन डबल डिजेनेरेट कोटा ट्रिपल डिजेनेरेट कोटा सिंगल डिजेनेरेट ओके तो आधरे तुमको कौन करिया पड़ियो सबुर वैल्यू ओके तो ये को थ्री ହେଲା କଣ କଣ ପଡେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବକ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବକ୍ସ ସବୁ ଖାଲି ଇକ୍ୱେସନ ଟିକେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ତମ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ କଣ ପଢିବ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ ଦେଖିକି ସଲ୍ଭ କରି ସବୁ ଟର୍ମ ଡିଫାଇନ୍ ସବୁଆଡେ ତାହେଲେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଆ ହେଇଛି ଖାଲି ଡେରିଭେସନ ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ୱାନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ ତମେ ଚାହିଁବ କେବେ ତମକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ଓକେ ତ ଆମର ବ୍ଲକ 1 ରେ କଣ ଥିଲା ବ୍ଲକ 1 ଇଏ ହଉଛି ୟୁନିଟ 1 fundamentals of quantum chemistry, introduction of quantum chemistry, introduction to wave mechanics, particle in one box, particle in box two. Okay. तो आम आदि कौन पढ़े टे आउ थे रिवाइज करदे तो पार्टिकल इंट्रोडक्शन रे आम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हीट कैपेसिटी ओके तापर यूनिट 2 रे आम कौन पढ़ले देखो आम टिके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आम पढ़ने तुम जहाँ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जहाँ थिला तुम सिलेबस रे जहाँ तो मेटेरियल अच्छी मेटेरियल लेंदी देची मुझे शॉर्ट करके टिके देची लाइन स्पेक्ट्रा आधर रेडिएशन ये देखो क्वेश्चन डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक गिव इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स ऑफ फोटो तार कौन लिखियो एमती क्वेश्चन पड़िबो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन तार कौन इक्वेशन लिखियो इक्वेशन को डिफाइन व्हाट इज ए ब्लैक बॉडी गिव सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन तो ब्लैक बॉडी रो सब लॉ देखियो केमते टेंपरेचर बढ़िले तार इंटेंसिटी बढ़ुची एगा सब लिखियो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन हेलो सुबुची तो Yes, sir. हां तो ये होची हमें बोर्स रेडियस देखो तो मेटेरियल जा আছে ମୁଁ ସବୁ शेयर लिया तो ये एनर्जी कैलकुलेशन केमती ये होची हमें फास्ट कोन ये रे पढ़िले प्लैंक्स आइडियल क्वांटम एक्सपेरिमेंट तापर आने कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव पार्टिकल डुअल डी ब्रगली इक्वेशन हमें पढ़थले ए डी ब्रगली इक्वेशन ये सब बहुत देखा है तम ये हम शॉर्ट शॉर्ट करके ता पावर पॉइंट इजीली देखिए हे तमर एमती कैलकुलेशन एक्स ये पड़ी पारे एच ये होची डी बगली एच इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम बी एच रे वैल्यू देई थबो एम रे वैल्यू v रे वैल्यू देई थबो पके दो एच लैम्बडा रे वैल्यू आ एच बाय p हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़िले हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी जा जा पढ़िले हमें तुम मेटेरियल रे टिके खेले दो del x del p h by 2 पढ़ले ना नहीं a importance of minus summary कि यूनिट 1 ना बस टर्मिनल क्वेश्चन है सब क्वेश्चन है हाउ बोर्स मॉडल असाइनमेंट सेल्फ असाइनमेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन कौन तो यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू वेव मैकेनिक्स हमें पढ़िले पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम कैरेक्टर ऑफ क्वांटम ऑपरेटर कांस्टेंट ये सब पढ़ साइ कौन साइ स्क्वायर कौन एरा पढ़ले नहीं ना बहुत थियोरी देई साइ एक्स स्क्वायर हला तो इजीली कैन साइ डिफाइन करा हो साइ एक्स
लाप्लासियन ऑपरेटर पढ़ले, स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ले, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंग एटा कहन ना साइ स्क्वायर साइ एक्स dx स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m स्क्वायर e by v इक्वेशन टा पकेले ने इक्वेशन टा पकेले कोडी पार्टिकुलर वन डायरेक्शनल बस तो व्हाट तापर पोस्टुलेट 3 पढ़ले आइजेन वैल्यू आइजेन फंक्शन एल मु तुम कल देखे जो तुम मटेरियल रे जाए पोस्टुलेट ये सब पोस्टुलेट्स पढ़ले क्वांटम मैकेनिकल और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज लीनियर ऑपरेटर ये तो बहुत जिनस देखिए क्लास रे भी थला ऑपरेटर केमती काम करूची हार्मिसियन ऑपरेटर ये हार्मिसियन ऑपरेटर तापर पार्टिकुलर वन डायमेंशनल जोटा कि लॉन्ग टाइम पड़ जाता है सब क्वांटम टा टिके लेंदी जिनस मैथमेटिकल जिनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन रे टिके मन पकेइबो ये आइला पार्टिकुलर वन जोटा लॉन्ग टाइम हम जोटा एबे कॉले ता लॉन्ग टाइम ता पीडीएफ टा मोर पढ़े पीडीएफ रे ताको तुमको दे दे ए पार्टिकुलर इन्फिनिटी रे गला है and the energy calculation of Schrodinger equation and पकेले वो फंक्शन नॉर्मलाइज फंक्शन से आगे बुझे कि तापर तक पुट कर हम आगे पुट करछे आगे पढ़े थले से वन डायमेंशन यू स्टार्ट v is equal 0 है एमटी रीजन एपटर सपोर्टर सब फॉर्मूला है ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन है e is equal 0 सॉल्विंग वर्क फंक्शन ये वॉल्यूम 0 पके देले एटा ए फॉर्म पाइला कारण v होची वो पोटेंशियल 0 एमटी आइला तब ये साइन ए फंक्शन रे नहीं नहीं ये फंक्शन नहीं जो फंक्शन हलो साइन रे इजी cos x sin x ये सब सेम सिस्टम और ये साइन फंक्शन में पके देखो फाइनल इक्वेशन मुझे नॉर्मल जा देखि नोट रा आदर टिके अधिया लिखि छ नोट आकार रे लॉन्ग टाइप टिके भल सेठी बुझिया कष्ट तो था आदर बुझियो तुम जोटा सुविधा लागे सेटा एरा 2/l आसिला ने √2 ना ये फंक्शन को साइ को आसी एनर्जी कैलकुलेशन ता हम लिखि एनर्जी 8 ml का एटा स्क्वायर कर देई जाओ ए फॉर्म का आइला e n is equal to n square l square by 8 ए फॉर्म को आइला सो डेरिवेशन कला पर ये स्टेट सेटा हम देखतली e1 रे कते है e2 रे e3 e4 n square s square by 8 ml square तो ये होची डिफरेंट एनर्जी के माटे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पार्टिकल कन्फाइंड होमोवेल डायमेंशन तो ये होची एनर्जी लेवल 8 पता what is 0 point it is the minimum energy that particle can have is called 0 point तो e1 होची square by 8 m square 0 point तो मिनिमम एनर्जी केते गोटा पार्टिकल थबो दैट इज द 0 पॉइंट एनर्जी s स्क्वायर 8 ml स्क्वायर तो फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी वो फंक्शन हम जो पहचानले incoming call from Bogara identified by true caller साइ स्क्वायर हाउ इज स्क्वायर रो तापर पार्टिकल थ्री डायमेंशनल दिखा तो बहुत दिन सा जेहेतु मटेरियल बही भलिया बहुत दिन सा देइछि कंपेयर जोटा इंपोर्टेंट दिन सा देख application one language application माने तार सब एनर्जी लेवल डायग्राम दिया
तापर आम 3 डायमेंशन ये सब प्रॉब्लम देछि से ये सब फार्मूला रे प्रॉब्लम कर फार्मूला पके तार n रो पायर वैल्यू सब देतो 3D रो box 2 mean 3 dimensional box cubic box ये 1 dimensional आगे देखेला 1 dimensional गला पर 3 dimensional ये x रो वैल्यू देछि x y z रो वैल्यू देछि particle in 3 dimensional box देखो x coordinate x direction y direction z direction 3 direction है kinetic energy सब समान रहइबो देखो लास्ट वैल्यू h square by 2 del dx square dy square dy sin x is x y z तीनटा कोऑर्डिनेट x y z तीनटा कोऑर्डिनेट बाहर की लास्ट वैल्यू लास्ट एनर्जी कैलकुलेशन ता हम लेते एनर्जी एक्सप्रेशन ns nh square by h square 8 n by n1 तले degenerates s square 8 ml square ये जाए l square दी n square ny square n degenerate state ये 2 1 1 1 2 1 1 1 सबरो वैल्यू n square by nx square ny square nz square ये degenerate पचारियो व्हाट इन 3 डायमेंशन में डिफरेंट degenerate states ये वैल्यू देई तो आर degenerate state कौन e 1 2 1 माने 6 कार कार स्क्वायर को तीनटार स्क्वायर 2 रो स्क्वायर है परियो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर जारी अको degenerate state एटा उठी देखो जूम करछि देखाउछि तो मटेरियल अछि देखो ई होछि नॉन डिजेनेट ये डिजेनेट डिजेनेट में तीनटा स्टेट्स अछि तीनटा स्टेट्स रो सेम एनर्जी है ये देखो तीनटा स्टेट रो सेम एनर्जी ये होछि तीनटा स्टेट रो सेम ये होछि नॉन डिजेनेट ये होछि केतना स्टेट 1 2 3 4 5 6 टा स्टेट 1 2 3 4 5 6 7 टा स्टेट same energy value केतना स्टेट रही that is allows energy level particularly in one time हेलो सुबह देखाओ जी हेलो Yes, sir. हेलो हाँ ये होची degeneracy सब तो मटेरियल अछि हैला क्वांटम degeneracy of states क्या प्रॉब्लम पड़िबो so this is all about mathematical expressions तो तमटी देखियो आ so that ethic energy state of particle in 3 dimensional are degenerate what is type of degenerate can be square करिवो same energy आछि माने particle in cubic meters so this is all about our कौन today's class हम कौन पढ़ले आज इंट्रोडक्शन पढ़िले तापर हमें पढ़िले डिफरेंट वेव मैकेनिकल टॉप तापर particle in 1 dimensional box particle in 3 dimensional box हला email long time टा पड़िबो आज रिलेटेड प्रॉब्लम पड़िबो तो प्रॉब्लम डायरेक्ट एनर्जी एक्सप्रेशन रे प्रॉब्लम अछि एनर्जी एक्सप्रेशन टा जवळ पड़िबो हला जेला ना
प्रिंट स्क्रीन नहीं जाए। हेलो Yes, sir. ମୁଁ କହିଲି ନୋଟଟା କ'ଣ ଦରକାର ତମକୁ? ନୋଟ ଆଉ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଯାହା ପଢା ହଉଛି ନା ତ ମେଟେରିଆଲ ଇଜ ଏନଫ୍? Sir, material ଆସିନି। ମେଟେରିଆଲ ଆସିନି ତମକୁ? ତମ ଲିଙ୍କରେ ଦିଆହେଇଛି। ନା ଲିଙ୍କରେ ଅଛି ଯେ ହଁ। ବହି ଆସିନି। ଓହୋ, ବହି ଆସିନି। ଓ ଲିଙ୍କରେ ବହି। ଆଉ ବହି ଆସିନି, ମୁଁ ଯାହା ପଢଉଛି ଯେତିକି ତମକୁ ପଢଉଛି, ଯଦି କୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ହଉ ନହେଲେ କାହାକୁ ଜଣକୁ ପଠେଇଲେ ତମ ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଥବ ତମେ ଏଇ ବିଷୟରେ। ଓକେ। Yes, sir. ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ବ୍ଲକ 2 ର ଯାହା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ଆଉ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ हार्मोनिक ऑपरेटर डिजिट रिजिड रोटेटर एगुड़ा सब पढ़िया है कि ओके। Yes, तो sir. आज टिके बुझी पाइल ना नहीं? Yes, sir. टिके बुझे टिके एक्चुअली टिके मैथमेटिकल जिंस अछि बोर्ड वर्क दरकार तथापि मु ताको ट्राई करछि केनती तमे जानियो कि टिके ताको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन खातारे टिके ताको इक्वेशन देखिले हबो हला। Yes, sir. ठीक अछि, क्लास बंद करिया। Yes, sir. Oh, okay. Thank you all. We'll see you in next class. Thank you, sir.